got a place, but you have no town. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too bare. Hi everyone and welcome back to my channel. I'm Anusha and thank you for joining me. So today I'm going to be showing you this 5 eyeshadow. Like this is a single eyeshadow from Coloressence. मैंने कुछ दिन पहले Coloressence की शोरूम पे गई थी तो उन लोगों ने मुझे जब ये eyeshadow को दिखाया so I was just like shocked. So मुझे लगा कि मुझे सारे के सारे जितने सारे शेड्स हैं मुझे सभी दे दो. तो उन लोगों के पास से 5 शेड्स तब तक था तो और भी कुछ शेड्स है मैं उन लोगों को ऑर्डर दिया तो वो लोग मेरे लिए लेके आएगा. And they are like super pigmented and super creamy and easy to wear. And इन सब का price like around 350 के अंदर है. So this is not a very luxury product like that. It's a very drugstore product. So you can purchase these types of eyeshadow. बहुत ही travel friendly भी है. आप अगर कोई कहीं पे जाना चाहते हो 2 दिन के लिए तो फिर इतने बड़ी बड़ी पैलेट को लेके जाने की आप लोगों का उतना पसंद नहीं है तो आप सिंगल आई शेडो को लेके जा सकते हो. दिस द शेड्स देयर हैव यहाँ पे कोई नेम लिखा नहीं है सिर्फ नंबर लिखा है. सो द नंबर इज 10 एंड यू कैन सी मैं आप लोग को स्वॉच करके दिखाती हूँ. सो दिस इज लाइक अ ब्लैक स्मोकी कलर. The next one is the green shades. The number is 9 and it's also a gorgeous green shades. This is not a deep green shade. Next one is this gorgeous purple shade and the shade is 1. Look at this shade guys. This is so creamy and so smooth. And the fourth one is the red wine shades and the number is 5 and this is my one of favorite shades. Oh my god, it's such a gorgeous red wine shade. You can see. And the last one is this gorgeous blue shades. Number is 02. Look at the shade guys. I am just falling in love with this all shade. So guys, you can see the all shades are just awesome, just stunning color and I am just love this all shades, especially the red wine shades. मैं बहुत confused हूँ कि मैं आज कौन सी शेड को लेके आप लोगों को दिखाऊंगी. तो मुझे काफ़ी लोगों ने पर्पल आई शेडो को लेके कुछ रिक्वेस्ट की थी तो टुडे आई एम गोइंग फॉर द पर्पल शेड्स. ठीक है, सो स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग गाइस. मैं अभी मेरी बेस मेकअप को कंप्लीट करके आती हूँ लौटती हूँ देन उसके बाद मैं आई मेकअप लुक को क्रिएट करूँगी. सो आई विल बी बैक आफ्टर द बेस मेकअप. Okay, so guys, I'm back with my base makeup and अगर आप लोग मेरी base makeup में कैसे करती हूँ वो देखना चाहते हो तो please click the link here and नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बार में भी मैं लिंक दे दूँगी. सो मैंने सिर्फ जो आईब्रो आज किया हूँ तो वो थोड़ा ब्राउन पेंसिल से मुझे करना पड़ा बिकॉज मैं जिस आईब्रो पेंसिल से करती हूँ वो मैं अभी ढूंढ नहीं पा रही हूँ. सो दैट्स वाई. सो मैं सिर्फ आई को छोड़ के बाकी जितनी सारी बेस मेकअप है लाइक कंटूर ब्लश एंड ऑल मैं सब कर लिया हूँ. सो अभी मैं मूविंग ऑन टू द आईज मैं यूज़ करूँगी दिस पर्पल शेड्स टुडे. ओके, सो फॉर दैट मुझे क्रीज लाइन के लिए मैं यूज़ करूँगी द हुडा ब्यूटी की दिस पीच शेड्स ऑन टू माई क्रीज. इस सेम शेड को मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी. नाउ मैं यूज़ करूँगी दिस गॉर्जियस पर्पल शेड्स.
आप इसको फ्लैट आई शेडो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो और फिंगर से भी. आई प्रेफर ऑलवेज फिंगर फॉर दिस क्रीम आई शेडो. You can see guys how pigmented it is. Such a gorgeous. So यहाँ पे थोड़ी सी मेसी लग रही है, but I have to cover this with some purple eyeshadow. सेम पर्पल शेड को मेरी लोअर लैश पे भी मैं अप्लाई करूंगी. देन अगेन इस पिंक शेड को, पीच शेड को लेके मेरी आउटर लाइन पे इस तरह से ब्लेंड कर दूंगी. देन इस येलो शेड को लेके मैं इनर कॉर्नर पे for my lower lash line waterline I'm using the Mars pencil number 31, this purple shade onto my it's a very light purple shade. Now मैं इस पैक में 72 लैश को पहन के मैं लौटती हूँ जल्दी से. So guys, I'm back with my eyelash. Now I'm using the Maybelline Lash Sensational Mascara. देन मैं बॉबी ब्राउन की जेल आईलाइनर को एक लाइनर ब्रश से जस्ट लैश लाइन के ऊपर मैं इसको अप्लाई करूंगी. देन इसको थोड़ी सी मैं स्मच कर दूंगी. And for my lip, I'm using the Bobbi Brown Babe Shades lipstick. It's a very natural. So guys, this is the final look. You can see right now, and I am just loving this eye makeup look, guys. It's a stunning eye makeup. Which I really loving right now. मैंने इसको बहुत ज़्यादा आई शेडो लेके मैं इसको अप्लाई किया हूँ. तो आप अगर ये सब कुछ नहीं चाहते हो, आप सिर्फ क्या करना, आप इस तरह से इसको अप्लाई करके सिर्फ इसको ऊपर की तरफ स्मच कर दोगे तो ये बहुत अच्छे से स्मच हो जाती है. यू कैन सी ब्लेंड हो जाती है. अगर आप ब्रश से इसको आईलिड तक क्रीज तक लेकर जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है. सो आई रियली लव दिस गाइस. This eyeshadow are really pigmented. And so guys, I hope you guys enjoyed this video. If you guys enjoyed this video, then please hit the like button and subscribe to my channel and click the bell icon for instant notification. And I'll see you all in my next video. Bye.